Can you guys tell me that what did we learn in our last class? हमने अपनी पिछली क्लास में कौन से टॉपिक पे बात की थी? Yeah, how do we talk? Kinds of sentences. Nice, Damni. So these were the things that was the topic that we were talking about. It was a sentence. Keep sending your messages in the chat box so that just because of you, others can know that these were the things that we discussed in the last class. We are going to rediscuss a little bit whatever we learned in our last class so that for those who were not present and those who were present but having internet issue or any internet glitches, they could not hear me properly. So I'm just going to give them a recap whatever we learned in our last class. Okay, before we take a recap, let's just talk about few things that can we say these things uh are these sentences correct to say? Is there any isn't there any mistake or is there any error? You guys can response me. Give me a response in the chat box. Okay, so let's just look at the first sentence. 2 dozens bananas. 2 dozens bananas. Is it a correct sentence? चलें दूसरा देखते हैं. Hundreds people. Hundreds people. No, why not no? You people say no? Okay. So how can we correct them? Let's have a look of third sentence, which is thousands people. Thousands people. Now don't tell me that it is also wrong. Okay, I want everyone's response in the chat box. Zareen is participating, Anisa is doing, and Vania is doing. Fozia, Faisal, Hadia, and Hafsa is doing. Where is Yusra? She responds very well. Where is she? And what about boys? Boys are totally quiet. What's wrong with you boys? Aren't you in competition? We never write dozens if we are using a numerical amount like 2, 3 before it. Okay, but do you see any 2 or 3 before dozen? Okay, there is 2. All right. So means we do not have any plural of dozen. We do not have any plural of 100. We do not have any plural of thousands. All right. Okay. So instead, what can we say? You people have told me that these sentences are incorrect. So how can we correct them?
we should say 2 dozen bananas, 100 people, and 1,000 people. Okay, so these are some other sentences I have written. Have you bought any biscuits? Would you like any biscuits? So there is a use of some quantifier. So instead, we should say, would you like to have some biscuits? Or have you bought some biscuits? Instead, we used to say, have you bought any biscuits or would you like any biscuits? So these are the incorrect forms. The first two sentences are incorrect. The second two sentences are totally correct. Do you guys get it? Acha, everyone just keep this thing in your mind. Your presence in the class is recorded, is already recorded. So you guys just don't need to tell that I am present. So just don't send these messages. Just focus on the class. Okay, so in our last class, we talked about the sentence. When we speak or write, we use words. We generally use these words in groups as little Jack sat on a corner. A group of words like this, जैसे कि ये group of words हैं which makes complete sense और हमें वो क्या देते हैं complete sense देते हैं कि एक जो बच्चा है whose name is Jack sat on a corner, एक corner पे बैठा है, complete sense दिया, दिमाग में picture बन गई, so means it is giving you a complete sense. And then we talked about the kinds of sentences, those which makes statements or assertion as Humpty Dumpty sat on a wall. You guys can see also whatever the words are, the combination of words, the group of words gives you a complete sense is called a sentence. Now there were the four kinds, those which make statements or assertions as Humpty Dumpty sat on a wall, those which ask questions, वो जो कि आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो या जो जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, where do you live, what do you do, what is your name, in this way. These are the general questions that I am saying. Those which express commands, request. The third one is those which express commands, requests, entities as be quiet, as be quiet, have mercy upon us. So the second one, have mercy upon us and be quiet. They both are somehow different. The first one giving a command and the second one have mercy upon us. Number 4 says, those which express strong feelings. How cold the night is. How cold the night is. What a shame. So these were the things that we discussed in our last class. If you have any confusion yet in these sentences, just let me know. Yet if you have any confusion with these things, just let me know. Just take a minute and write it in a chat box. Manu Navi says, yes, sir, for what for?
No confusion, we should go ahead. Okay, so as we have learned sentence, जब हमने sentence पढ़ लिया, so the next we have subject and predicate. These are the two part of the sentence. ये दो parts हैं किसके? Sentence के. When we make a sentence, जब भी हम कोई sentence बनाते हैं, we name some person or thing. ठीक है, उसमें या तो कोई पर्सन होता है जिसका कोई नाम होता है, या कोई ना कोई चीज होती है. देयर इज समवन और समथिंग, समवन और समथिंग. सो वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. या तो हम उसका नाम लेते हैं, या तो उसका कोई नाम होता है, मीन सब्जेक्ट होता है, या उसके बारे में हम कभी कोई बात करते हैं. Okay, if I tell you in other words, we must have a subject to speak about. हमारे पास कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करें, एंड वी मस्ट से और predicate something about that subject. Hence every sentence has two parts. As I told you कि हर sentence के दो parts होते हैं. एक को कहते हैं हम subject. Let me write it on the board. Okay, sentence के क्या होते हैं? दो parts होते हैं. एक को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट. एक पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट. दे बोथ मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, द पार्ट व्हिच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, उसको क्या कहेंगे? जो पार्ट होगा किसी भी सेंटेंस का, जो पार्ट होगा किसी भी सेंटेंस का, उसको हम क्या कहेंगे? जो कि क्या कर रहा है, किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. द पार्ट व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसको हम क्या कह देते हैं कि ये जो है अपना प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. तो सब्जेक्ट जो है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, उसको हम कहाँ लिखते हैं सेंटेंस में? हमेशा ये कहाँ आता है? फर्स्ट में. एट फर्स्ट, इट कम्स इन फर्स्ट एंड द प्रेडिकेट कम्स इन लास्ट आफ्टर द सब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. Let me give you an example for this so that everyone can understand. We have most of these students from 5 also and 6 also. So keeping them in mind, let's go a little slower. Just give me a second. Okay. So all complete sentences needs a subject and predicate as we have discussed. So the subject and the predicate.
द सब्जेक्ट टेल्स द हु और व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट क्या बताता है आपको कि सेंटेंस किसके बारे में है। ठीक है, सब्जेक्ट में हमें क्या पता चलता है, सब किसके बारे में, और प्रेडिकेट में किसके बारे में क्या पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, डूअर ऑफ वर्क क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। लेट्स से द डॉग barks एट द केज। नाउ टेल मी, जो प्रेडिकेट है वो किसके बारे में है। प्रेडिकेट जो है किसके बारे में है। इट्स अबाउट द डॉग, वेरी नाइस। मिस्टर स्मिथ इज माई टीचर। मिस्टर स्मिथ इज माई टीचर। द सब्जेक्ट टेल्स द हु और व्हाट अ सेंटेंस अबाउट। तो ये सेंटेंस किसके बारे में है। सेकंड सेंटेंस किसके बारे में बात हो रही है। मिस्टर स्मिथ के बारे में बात हो रही है। वेरी नाइस। हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मिस्टर स्मिथ। ठीक है, ओके, नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो एंड बॉब जो एंड बॉब प्लेड एट रेसेस। सो ये सेंटेंस किसके बारे में है। जो एंड बॉब के बारे में। सो जब भी सेंटेंस जिसके बारे में होगा, फिर चाहे वो कोई चीज हो, कोई एनिमल हो, या कोई भी इंसान हो, तो उसको हम हमेशा कहेंगे ये सब्जेक्ट है। उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, दिस इज द सब्जेक्ट। और द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, कि वो सब्जेक्ट क्या है या वो क्या कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है या वो क्या कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे क्या है, तो ये सेकंड सेंटेंस देखना। अगर ये सेकंड सेंटेंस देखें, इज माई टीचर, तो यहाँ पे मिस्टर स्मिथ कुछ कर रहे हैं क्या। मिस्टर स्मिथ तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जगह जब हम फर्स्ट सेंटेंस देखें, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस ये वाला देखते हैं, तो इसमें तो जो डॉग है, ही इज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी ऑफ बार्किंग। वो तो कुछ कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, ही इज बार्किंग। बट व्हाट अबाउट मिस्टर स्मिथ, इज ही डूइंग समथिंग, क्या वो कुछ कर रहा है। क्या जो मिस्टर स्मिथ है कुछ कर रहा है, कोई काम परफॉर्म कर रहा है। नो, ही इज नॉट परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। बट हमारा कौन सा पॉइंट इसमें कवर हो रहा है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, के सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर स्मिथ क्या है, टीचर हैं। व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, व्हाट द सब्जेक्ट इज के सब्जेक्ट क्या है और क्या कर रहा है या क्या करता है, या क्या कर चुका है या कर चुका था। तो खैर टेंसेस के बारे में अभी बात नहीं करते हैं, सिंपली सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सो ये चीज क्लियर है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है एक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। इज दैट क्लियर टू यू। अब थोड़ी टफ एग्जांपल पे आ जाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन comprehend दिस। देखते हैं, चलो ये किस किस को क्लियर हो चुका है।
So those who have missed the class, they can take the recording, because if I started repeating myself, so others are gonna get bored, right? So here comes the bus. Now take a second and just tell me, here comes the bus. What does it mean? And okay, where is the predicate and where is the subject in this? Here comes the bus. Better try sending me direct message. Try sending me direct message, because rest of are gonna copy. So the bus is subject. Everyone says the bus is subject. Here comes is the predicate. So as I told you in the starting कि लाजमी है कि जो मतलब तकरीबन जो है हमारे पास सब्जेक्ट पहले आ रहा होता है, but it is not mandatory that a subject should comes at first. Usually it comes first. आम तौर पे ये जो है पहले आता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि इसको पहले आना चाहिए. So this is why I give you a little difficult sentence so that you guys can check your understanding कि आपको कितना समझ में आया. Bus is subject and here comes his predicate. Yishra, you are a little late. It's Yishra. Acha. Okay. So let's talk about imperative now. ये तो हमने जो sentences की कल kinds पढ़ी थी, उसमें हमने imperative भी तो पढ़ा था. जैसे कि था close the door. ये जो भी आपने दिए थे, फिलहाल मेरे जहन में यही आ रहा है. So close the door. Yeah, sit down. The teacher sentences at school. यही होता है ना, दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ, खामोश रहो, जल्दी से लिख लो, बेटा मेहरबानी करके लिख लो. सो इसमें भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है. हमें लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद है लेकिन हिडन है. डोर इज द सब्जेक्ट. वानिया सेज डोर इज द सब्जेक्ट. अब फंसना शुरू हुए. अब्दुल बासित सेज डोर इज द सब्जेक्ट. लेट्स से व्हाट डज युसरा से. यस युसरा. Yashra says door is subject. Maria says door is the subject. No, 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 no. It's an imperative sentence. Let me clear. Let me be very clear in my instruction that the door. बेटा नेट का काम नहीं चलेगा. ये सर्चिंग नहीं चलेगी. बुरी बात. सी, अगर खुद से नहीं सीखोगे तो फिर नेट से तो आप बाद में भी कुछ भी कर सकते हो. So those who are searching on the net of the answers on the net, so please I really request them not to do this, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आपका.
फिर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें। And I'm not taking Zoom classes for the very first time. It's been 3 years maybe that I am taking Zoom classes. So somehow I know when the student is responding in the end and gives a correct, totally correct answer with all the punctuations. So what does that mean? It means it's a use of internet. So it's good that no one could see your answer. It was a direct message, but I would request everyone not to go for internet. It's okay. अगर नहीं आ रहा है ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम पढ़ने के लिए तो बैठे बैठे हैं, सीखने के लिए बैठे हैं ना। ओके, सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे जो क्लोज द डोर में एक सब्जेक्ट है, लेट्स से let's say if the person X ask to person Y, X person है जो कि कहता है Y person को, X और Y नाम है, ठीक है। X person कहता है Y person को क्लोज द डोर। तो अगर वो ये कहे यू क्लोज द डोर, यहाँ पे यू सब्जेक्ट जो है ना, यू एज अ सब्जेक्ट इज व्हाट इज अंडरस्टूड। वो वहां पे पता चल रहा है कि दो बंदों की बात हो रही है, वन इज आई, द सेकंड वन इज यू। सो आई सेड टू यू close the door, join the meeting, take your class, take your class. So you subject is hidden or understood over here. Do you guys get it? So what is the predicate? The this whole sentence is predicate, and the definition of the predicate tells us what the subject is or does. So you close a door. What does you do? What does you do? What do you do? You close the door. यशरा से समझ में नहीं आई। अच्छा, एक सेंटेंस देखो, सब कुछ अपने दिमाग से निकाल लो। एक सेंटेंस देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डू यूर होमवर्क। इसको समझने से पहले आपको इंपेरेटिव समझना चाहिए। डू यूर होमवर्क, डू यूर होमवर्क। अगर यहां से मैं यू को हटा दूं और मैं कह दूं डू द होमवर्क, तो यहाँ मैं दोनों सेंसेस में आप ही को ही कह रहा हूँ। यशरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नाउ यू टेल मी, मैं आपको कहूँ डू द होमवर्क या मैं कहूँ डू योर होमवर्क, बोथ सेंस इन बोथ दीज सेंटेंसेस आई एम टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब था, ठीक है। तो डू द होमवर्क इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ। डू द होमवर्क, मैंने आपको कमांड किया कि आप अपना होमवर्क करें। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो तो यू ही था ना, जो अंडरस्टूड था कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, यू से, सामने वाले से, द सेकंड पर्सन से। इसको मजीद इजीली समझो, द फर्स्ट पर्सन इज हु टॉक्स, हु इज स्पीकिंग, ठीक है। द सेकंड पर्सन टू whom वी आर टॉकिंग, द थर्ड पर्सन फॉर whom वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन था, आप थे जिससे मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन एज अ सब एज अ यू इज अंडरस्टूड। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दिखेंगे तो वहां पे यू अंडरस्टूड है कि यहाँ पे यू ही आएगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ आई? नहीं, स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है टेल मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Okay, so for this, Anisa, for this, if you still can't get it, so what you have to do, बस कल का लेक्चर नहीं, सिर्फ आज का लेक्चर, क्योंकि उसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर की भी बात की है विथ एग्जांपल्स, तो इसको दोबारा से देखिएगा।
इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कहाँ जो है मसला आ रहा था। अभी तक किसी को कोई और मसला?